Jai Gurudev students, very good morning to all of you. Today we will continue with the same chapter, that is resources. In this we have seen what do you mean by the term resources and the classification of resources. In classification we have seen the natural resources, man-made resources and human resources. Now we have also seen the classification of natural resources also, right? We have seen the biotic and abiotic resources. What is biotic? All the living organisms comes under biotic resources, and all the non-living natural organisms, or we can say all the non-living things, comes under abiotic resources. Now we'll see the second type of resources, that is again natural classification of resources, that is the classification of natural resources only, है ना? That is potential and actual. Now what is potential? See, we'll just read from here. These are the resources that have great potential and can be beneficial in future. They need to be developed. That is, see, we all know that the sun is also giving us the energy, but we just invented the solar energy, है ना? पहले से नहीं थी, naturally available नहीं थी. Energy is there in the sun, but we just need to derive or we just need to grab the potential from the sun. मतलब हमने उस energy, हमने sun की जो light थी उसको energy में convert किया, तो that is known as solar energy. ऐसे wind resource है, लेकिन wind से हमने energy का production किया, तो that is known as wind energy. In the same manner, biofuel is also a type of potential resources. Okay, now we come to the actual resources. What are actual resources? Which are actually available in the form of energy. Like that, mineral deposits वो available ही थे, ठीक है ना? तो हमने उनको we just found it from the earth and we use it as a form of energy. ठीक है? Mineral deposits such as iron, coal, petrol, etc. are some of the examples. ठीक है? हमने इसको अलग से convert नहीं किया students, ये actually available थे earth में in the form of energy only. So this is the meaning of potential and actual resources. अब हम आ जाते हैं next जो हमारा type है, that is renewable and non-renewable. We just read it from here. That is, what are renewable resources? Renewable resources are those which can be regenerated, मतलब जिसको आप वापस से renew कर सको. ठीक है? कैसे renew कर सकते हैं हम? मतलब ये अपने आप जो है these resources अपने आप after a certain period of time renew हो जाती हैं, वापस से आ जाती हैं. ठीक है? मतलब these resources get regenerated and replenished with time. These include animals, plants, water, soil. ठीक है? Due to increasing population, जैसे जैसे population बढ़ रही है ना students और development बढ़ रहा है, these are being depleted because उसका use जो हो रहा है over use हो रहा है. प्लांट्स क्या होते हैं, वापस से फिर आ जाते हैं. ठीक है? एनिमल्स जो डेड हो गए हैं या जो सपोज जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो अपने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो बढ़ने लगते हैं. ऐसे वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्स था, लेकिन इतना पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया कि नाउ डेज वाटर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल. ठीक है? अब वाटर भी कम पड़ने लगा, जो कि प्लेंटी था. इट इज़ in the form of renewable, and it is in the sufficient form of water we are having with us, है ना? So this is renewable. Non renewable जो
डज नॉट गेट रिप्लेनिश इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ ही करते रहेंगे तो धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। दीज गेट एग्जॉस्टेड। इट इंक्लूड्स कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, मेटल्स। ठीक है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल। अब now we come to the next classification, that is ubiquitous. Ubiquitous resources मतलब the resources which are found everywhere in the atmosphere, हर जगह मिलता है। जैसे कि एयर हर जगह अवेलेबल है, लाइट हर जगह है, हम जिसको हर जगह जो हमें मिल रही है which are found everywhere are known as ubiquitous resources. Now the next one is localized, means एक सर्टेन एरिया में ये रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, सब जगह नहीं मिलेंगे। जैसे डायमंड एंड गोल्ड, दीज आर द मेटल्स और मिनरल्स विच आर फाइंड इन द माइंस, है ना, हर जगह हमको नहीं मिलेगा। ऐसे ही जिंक, कॉपर, जियोथर्मल पावर, दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज विच आर फाइंड इन द स्पेसिफिक प्लेस। ओके, नाउ here this is the classification of resources. So today we'll complete this much only. In the next class we'll complete the man-made and human resources and the conservation and sustainable development. Okay, Jai Gurudev.